Thank you. Good evening, my future chartered accountants. Good evening, Alok. Good evening, Mr. Ingle. Good evening, Chatan. Good evening, Mitesh Bhai Patel. Good evening, Abhishek, Priyanka, Mohammad Islam. Good evening. And very good to see that some of you are the students of foundation of my class. Last year जब हमने foundation class ली थी उससे कुछ student हैं, that's very positive thing for me. And I'm very much glad to see all of you. Okay, so जो लोग जानते हैं तो वो तो मालूम है मेरे बारे में, and I should introduce myself before starting the class because this is the first lecture in CA Intermediate, and myself CA Sujit Kumar Jain, and I am from the city of Taj, Agra, UP. So I am here with you for 3 days in the Indian Contract Act. So good evening, Sushil. Good evening, beta. Good evening, Sapna, Pranav, Jivitha. Good evening, beta. Someone is saying, sir, nice to see you again. My name is Abdul Qadir, but it's from the issue of app. It shows my name as Khojma. कोई दिक्कत नहीं है, nothing यार. You are Abdul Qadir for me. So good evening, Pratham, Manoj, Samir, Ingle. I am very much fine, beta. Okay, Priyanka is also. I remembered. Priyanka, welcome back, sir. Well, thank you so much, beta. Chatan is also from foundation. Arey wow, very good. Jyoti, Lakshmi, Parsarthi, good evening, bete. So I think let's start. गुड इवनिंग बहुत सारी हो गई, स्टार्ट करें क्या बच्चों? अलाउ करो, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 3 यूनिट यहाँ पर हैं. ओके, तो आई विल टीच इन इंग्लिश और हिंदी ऑल्सो, तो कॉम्बिनेशन रखेंगे ताकि परेशानी ना हो. कोई दिक्कत हो आप क्वेरी पूछिए, डोंट वरी, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेरी. नोट्स मैंने अपलोड कर दिए थे, इसका जो पीपीटी है वो पीडीएफ में अपलोड कर दिए थे. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 3 यूनिट यहां पर हैं. यूनिट 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, एंड यूनिट 3 एजेंसी. तो गारंटी या इंडेमनिटी एंड गारंटी कवर सेक्शन 124 टू सेक्शन 147. bailment and pledge covers section 148 to 181, and agency section 182 to section 238, right? So this is the coverage in the last 5 exams of this Indian Contract Act. Okay, good evening, Gomti, Piyush, good evening. Mohammad Aslam saying, sir, I scored first class in the business law. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you so much. So मैं जितना मैं देख रहा हूँ इसका ट्रेंड, आई एम जस्ट वॉचिंग द ट्रेंड दैट आई एम फाइंड कि each and every attempt one question is asked from each unit, and that is the practical, and you may call it the descriptive question. तो descriptive question है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 12 मार्क्स का कवर है. और मुझे लगता है कि अब next after 3 lectures for Indian Contract Act, you all will be able to solve each and every question from this act. ठीक है ना? तो I have always focused on presentation, कि भैया presentation इतना अच्छा करो कि 10 रुपए की रोटी की वैल्यू 100 रुपए की रोटी होता है. तुमने पिक्चर लगाई है ना बच्चे, वो मैंने शायद जो मेरे फाउंडेशन के बच्चे वो जानते हैं इस बात को, मैं वहां भी डिस्कस करता हूँ कि ढाबे में वही रोटी 10 रुपए की है, 5 स्टार में 100 रुपए की है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन. तो यू हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन सो दैट योर चपाती में वैल्यू ऑफ ₹100. ठीक है ना? एंड वी स्टार्ट विद द वर्ड्स ऑफ आवर पास्ट प्रेसिडेंट लेट श्री APJ अब्दुल कलाम साहब. All of us do not have equal talent.
but all of us have an equal opportunity to develop our talent. ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से अपने टैलेंट को डेवलप करें, राइट बच्चों? आई रिमेम्बर दिस एग्जाम्पल, ओके। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, तो सेक्शन, I have just given the summary of section. Contract of indemnity, section 124 and 125. Contract of guarantee, section 126 to 127. अच्छा, इसमें ना इंडेमनिटी वाला पार्ट सिर्फ सेक्शन 124 और 125 है, 2 सेक्शन है, बाकी जो है वो सिर्फ गारंटी के हैं, 126 से लेकर 147 तक। नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, सेक्शन 128, continuing guarantee, section 129 to 132, discharge of surety 133 to 139, and rights of surety, section 140 to 147, right? Chetan is saying, sir, can you give tips how to learn the section for these chapters? देखो, एक बहुत पुरानी कहावत है यार, बचपन से मैंने सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, या कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो करना क्या है कि जब भी आप किसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो साथ में उसका टॉपिक भी, सेक्शन भी नोट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें याद करना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए हमारे सेक्शन 126 एंड 127। खाली टॉपिक याद ना करें, हम सेक्शन के साथ रीडिंग करें, यही अपनी हैबिट बना लें, राइट? Manoj Kumar is saying, sir, in 5-star chapati is 195, beta, maybe of 500 rupees also. Vedant, I noted your. Thank you, Vedant. आज पिक्चर मेरी कुछ गड़बड़ कर रही है बार बार, और अच्छी बात है कि जो हमारी स्क्रीन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। Let's start with the meaning of indemnity. तो what is the meaning of indemnity? Indemnity का मतलब होता है to make good the loss of incurred by any other person or to compensate the party who has suffered some loss. Indemnity का मतलब क्षतिपूर्ति, हिंदी में बात करें क्षतिपूर्ति, किसी के लॉस को compensate करना is called indemnity. What actually happened that section 124 has given the definition of contract of indemnity in Indian Contract Act. What section says? A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person. Just read once again. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Now, when we come to the analysis of this definition, we find that section 124 covers the loss caused by conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. But it does not cover the loss by conduct of the promisee himself or by accident or by act of God, the natural calamity. So section 124 ने जो cover किया, actually someone is saying, sir, please speak in English. Beta, I am just repeating in Hindi. I am taking the provisions in English and I am just repeating the Hindi. ठीक है? कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ. I am not giving any new thing in Hindi, but just repeating what I have spoken in English. So let's see the section 124 is, you can say that is an incomplete section because it does not cover the loss by natural calamity or by the loss by the act of promisee.
So it was in 1942 that in case of Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan, decision was taken on the basis of English law. And what English law says? English law says the indemnity means promise to save another harmless from the loss. It does not define the way of loss. It's just giving the loss. मतलब इतना का loss को save करना is indemnity. So now it covers every loss, whether due to negligence of promisee or by natural calamity or by accident. It is clear? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों किसी को? यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो पूछिए प्लीज. इस सेक्शन 124 covers the loss by the conduct of the promiser himself or any other person. But as per the decision taken in case of Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan, indemnity covers each and every loss, including loss by the negligence of promisee or conduct of the promisee or by the natural calamity or by accident. Whether insurance contract is contract of indemnity, you can say yes, but अभी थोड़ा सा वेट करो बच्चे, अभी अपन इस पे भी आएंगे. तो यहां तक कोई इश्यू डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी में कोई इश्यू किसी को? नो डाउट, क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? So there are two parties in the contract of indemnity. The person who promised to compensate for the loss is called indemnifier, and the person to whom the promise is made or whose loss is to be made good is known as indemnity holder or indemnified. मतलब the person who will compensate the loss is called indemnifier, and whose loss will be compensated is called indemnity holder or indemnified. मतलब कि जो लॉस को कॉम्पनसेट करेगा वो कहलाएगा इंडेमनिफायर, और जिसका लॉस कॉम्पनसेट किया जाएगा ही विल कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफाइड. लेट्स सी एन एग्जांपल. मोहन कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई सोहन अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी लॉस ड्यू टू फायर. तो who is the person who will compensate? That is Mohan. So Mohan is indemnifier, and whose loss will be compensated is Sohan. So Sohan is called indemnity holder, right? Pranav is asking, बच्चे मुझे ऐसे ऐसी बात करते मजा आ जाता है, मुझे खुश हो जाता हूँ मैं. क्या कह रहे हैं? प्रणव से कह रहे हैं कि सर ओ माय गॉड मूवी इसी पर बनी थी क्या? नहीं यार, उसका कंसेप्ट कुछ और था. वहां तो इंश्योरेंस का लॉस था, राइट? तो यहां तक क्लियर हो गई पार्टीज हमको. नेक्स्ट पॉइंट, मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कितने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जा सकता है? एक्सप्रेस. देखिए, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में फाउंडेशन पढ़ा था, एक्सप्रेस का मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड का वही मतलब है. When a person expressly promises to compensate the other from loss by oral or by written. Implied by conduct, when the contract is to be inferred from the conduct of the parties or from the circumstances of the case. See the example. Good evening, Shubhanshi. One note, important note. All the essentials of a valid contract must also be present in the contract of indemnity. यानी कि जो बेसिक चीज है ना वो तो होनी है भाई. The basic requirement of section 10 should be present in the contract of indemnity, because basically what is this? It is a contract. Example 2, X asks Y to beat Z. अरे बाप रे. X asks Y to beat Z and promise to indemnify Y against the consequences. What happens? Y beats Z and is fined ₹1,000. Y cannot claim this amount from X because object was unlawful. X ने Y को कहा Z को पीटो और मैं उनको कॉम्पनसेट करूंगा, तो ये तो एक्ट ही अनलॉफुल हो गया ना बेटे, इसलिए दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? यहां तक अपने को सेक्शन 124 क्लियर हो गया, अपने को पार्टीज क्लियर हो गई,
अपने को मोड ऑफ क्रिएशन क्लियर हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे। रीजन फॉर लॉस, तो ये हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रीजन ऑफ लॉस, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन समरी। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट स्पेसिफाई दैट इंडेमनिटी होल्डर शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस कॉज्ड ड्यू टू action of promiser himself, any other person. This is by section 124, and third line is by case of Mauricio Madan. Any act, event or accident which is not in the control of the party. Clear? Okay. Rights of indemnity holder. सब बच्चों क्लियर रहता है, बड़ा खुशी सी होती है मुझे when you say सर क्लियर, मुझे लगा कि हो गया पर्पस पूरा मेरा। तो सेक्शन 124 हमने पढ़ लिया डेफिनेशन का, उससे सारी चीजें निकालनी, कौन पार्टी होगी, क्या मोड्स होंगे। अब हम लास्ट मतलब अब सेकंड सेक्शन 125 इंडेमनिटी टॉपिक में ओनली 2 सेक्शन, देयर इज ओनली 2 सेक्शन इन द टॉपिक ऑफ इंडेमनिटी। 124 डेफिनेशन एंड 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। फर्स्ट राइट, right to recover all damages. All damages means all damages which he may be compelled to pay in the suit in respect of any matter to which the promise to indemnify apply. यानी कि जो भी आपने प्रॉमिस किया था कॉम्पनसेट करने के लिए, वो आपको डैमेज लॉस पे करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट, अगर मान लीजिए इसके लिए पार्टी को कोई सूट फाइल करना पड़ा, ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन द ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच सूट, देन इट इज आल्सो कैन बी रिकवर्ड। राइट टू रिकवर अदर सम, all sum which he may have been paid under the terms of any compromise of such suit. So first one is for what we have what is the decided between the indemnifier and indemnity holder. Second is suppose the indemnifier is not interested to pay compensate, then indemnity holder has to file the suit in the court. So all expenses he can recover from indemnifier and such any other sum in the form of compromise. Yeah, you can say that if the amount of interest on the loss, suppose कि 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, suppose the loss was of 1 lakh rupees and that was paid after 1 year, so he can charge the interest on 1 lakh rupees. Clear इतनी बात? सर पेज नंबर 11 once again, ये तो क्लियर हो डिस्कस कर चुके बेटा मनोज, सॉरी पीयूष। 11 क्या क्या चीज क्लेम कर सकते हैं हम, कौन कौन से लॉस कवर होते हैं? लॉस बाय द एक्शन ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, लॉस बाय एनी अदर पर्सन और एनी नेचुरल कैलेमिटी। And what the indemnity holder can claim from indemnifier, these are the 3 things. All damages which was for which the agreement was entered. Second is recover expenses to recover these damages and any other sum which should be paid by the indemnifier to indemnity holder. Clear नहीं बात? मनोज बेटा आपने कुछ लिख के दिया, सिविल सूट पूरी आप बात लिखें तो मैं समझ पाऊंगा आप क्या जानना चाहते हैं। प्लीज एक बार आपने पूरी प्रॉब्लम लिख दीजिए। सो दिस इज द टाइम ऑफ सुपर ओवर, रिमेंबर। एंड एक्चुअली व्हाट इज द सुपर ओवर? इन सुपर ओवर आई विल आस्क 6 क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी जैसे हमने 2 सेक्शन डिस्कस किए 124 एंड 125, तो उस पर मैं आपको 6 क्वेश्चन रखूंगा ताकि हमें भी याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था। और यू हैव टू सेंड द आंसर्स इन 1 शॉट, ऑल द 6 आंसर इन 1 शॉट, 1 by 1 नहीं भेजने हैं, डोंट सेंड 1 by 1। एंड आई विल टेक द नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु विल सेंड ऑल द करेक्ट आंसर्स, ठीक है? सुनील इज आस्किंग हाउ टू फाइल सिविल सूट। सिविल सूट क्यों फाइल करेंगे बेटा? रिकवर करने के लिए, मतलब वो तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट का वही होगा, इसमें हम क्या कह सकते हैं? सुनील कुमार, राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट इंक्लूड्स ट्रैवलिंग चार्जेस, इट मे बी इफ इट इज एज पर द कोर्ट की सही है। फॉर एग्जांपल आपने कोर्ट जाना पड़ा, उससे आपको ट्रैवलिंग खर्चा करना पड़ा, तो वो आप कवर
It is also defined at what rate interest to be charged or based on the court decision. बेटा ये तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा ये कोर्ट डिसाइड करता है. मिस्टर अब्दुल कादिर सिंह सर, दामोदर भाई इस बार चेंज हो गया करेक्टर बच्चे, वो कल आएगा दामोदर भाई वाला कंसेप्ट. तो प्रणव सिंह सर सब याद आ रहा है, पुराना मजा आ गया. वेरी गुड, मुझे भी मजा आ रहा है. प्रियंका सर, आई एम वेटिंग फॉर सुपर ओवर, आई एम जस्ट ऑल्सो वेटिंग. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सुपर ओवर. कोई क्वेरी तो नहीं है बच्चों, पूछ लो. चलिए, फर्स्ट पॉइंट भेजना एक बार में बच्चों, एंड ऑल द आंसर इन वन शॉट. ठीक है. इंडेमनिटी मींस सिक्योरिटी फ्रॉम डैमेज और लॉस, सिक्योरिटी फॉर प्रॉफिट एंड एक्ट फॉर प्रोटेक्शन बोथ ए एंड बी. Next question. Section 124 of the Contract Act define contracts of minor, contracts of conditions, contract of indemnity, none of the above. प्रथम बेटे आपको वन बाय वन आंसर नहीं भेजना है, सारे आंसर एक साथ भेजिएगा. Third question. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called surety contract, simple contract, contract of indemnity, none of the above. Fourth question. The contract of insurance is in fact a contract of urgency, indemnity, both A and B, none of the above. Fifth, Section 124 to 147 of the Contract Act deals with contract of indemnity, contract of guarantee, both A and B, none of the above. Next, a contract of indemnity shall be valid only if it is in writing, signed and registered, both A and B, none of the above. कब वैलिड होगा? राइटिंग होना चाहिए, साइंड या रजिस्टर्ड होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए, इसमें से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. चलिए, मैं आंसर डिस्कस करता हूं आपके साथ जब तक आपके आंसर आएंगे. इंडेमनिटी मींस सिक्योरिटी फ्रॉम डैमेज और लॉस, सिक्योरिटी फ्रॉम प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है. एक क्वेश्चन में तो मुझे लग रहा है बच्चों के जो आंसर आए हैं सभी कंफ्यूज हो गए. देखते हैं, लेट्स सी. Second is section 124 defines the contract of indemnity.
Third, this is again the contract of indemnity. Next, contract of insurance. In fact, it is a contract of indemnity. अर्जेंसी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है. Fifth, section 124 to 147 A and B, यानी कि इंडेमनिटी भी कवर होता है, गारंटी भी कवर होता है. दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन. A contract of indemnity shall be valid only if it is, यानी कि रिक्वायरमेंट इन राइटिंग होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. मे बी एक्सप्रेस, मे बी इम्प्लाइड. साइन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी नहीं. दिस इज नॉट द ऑप्शन इन द चॉइस. तो सी, जब इफ ए एंड बी इज नॉट द करेक्ट आंसर तो सी कैन नॉट बी. तो द आंसर इज डी. भाई क्वेश्चन को समझो, प्लीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन. A contract of indemnity shall be valid only if it is in writing, then it is valid. No, not requirement. It should be signed and registered. No requirement. It may be oral, na? So the answer is D. So who are the lucky one? Check करते हैं. So first one is Mr. Love Gupta. Very good, congratulations. Next one is बच्चों. अभी तक तो जो नंबर मेरे पास नंबर आया, आपका आंसर आया, उनमें से एक ही बच्चे का सही था, लव का. Only the love is the person who has given all the correct answers. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्टार्ट करते हैं. जब तक क्या कह रहे हैं, हर्षित. Good evening, sir. Nice to meet you again. I am your foundation student of batch 5. Thank you, but I am just also very pleased to meet you again. Your notes are amazing to get the matter. Thank you so much, बच्चे मेरे. So now the topic is contract of guarantee, section 126. Alok is saying, sir, only one wrong in 6. कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा सा cautiously आप लोग पढ़ना, हो जाएगा. पीयूष, 5 are correct, 1 is wrong. कोई नहीं, it's okay, everything is good. A contract of guarantee is to contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of default. Third person case of default, ये तो हो गया definition. This is the definition. What is the actually the contract of guarantee? See, a query है, just 1 minute. If indemnifier has given his surety about the third party and such third party has not paid the seller his money, so can the seller avail the right of unpaid seller indemnity holder both? मिस्टर अब्दुल, अभी प्लीज वेट कीजिए थोड़ा सा, जब आप गारंटी पढ़ लेंगे तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा. ठीक है बेटे. तो सी द पिक्चर एंड ऑफ एग्जांपल इन योर स्लाइड. देखिए क्या है. ए इज प्रिंसिपल डेटर,
B is surety, C is the creditor. So what is the case? Mr. B asked Mr. C, give a car to my friend. If A does not pay, I will pay. Mr. B says to Mr. C, please pay. Please give the car to to my friend Mr. A. If A does not pay, I will pay. तो एक्चुअल में क्या हुआ कि बी ने सी को बोला कि भैया एक काम करो, इसको कार बेच दो, ए को, मेरा दोस्त है, और अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं गारंटी देता हूं मैं पे करूंगा. द पर्सन हु इज गिविंग द गारंटी इज कॉल्ड गारंटर, एंड इन लैंग्वेज, इन contract language, in the law language, it is called surety. Surety means who is giving the guarantee. Surety means giving the guarantee. And to whom the guarantee is given is called creditor. C is the creditor. And in respect of whom the guarantee is given is called principal debtor, or you can say the third party. जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, थर्ड पर्सन, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर. जिसको गारंटी दी जा रही है वो क्रेडिटर, और जो गारंटी दे रहा है ही इज श्योरिटी. इट इज क्लियर? अब कम टू द डेफिनेशन. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन. थर्ड मीन प्रिंसिपल डेटर in case of a default if he will not pay. It means if A will not pay, B have to pay. This is called the contract of guarantee. Clear? Mr. English says, what is the difference between contract of indemnity and contract of guarantee? Just wait for 1 hour. You will understand the difference. ठीक है ना? Clear हो गया यहाँ तक? Guarantee means एक पर्सन दूसरे को कह रहा है कि तीसरे को माल बेच दो, अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट. He is giving the guarantee. The person who is giving the guarantee is called surety. Clear? Next point. Parties to contract of guarantee. When we are discussing the parties to the contract of indemnity, there are two parties, indemnifier and indemnity holder. But in this case, contract of guarantee, there are three parties. Surety, the person who gives the guarantee, principal debtor in respect of whose default the guarantee is given, and creditor to whom the guarantee is given. Clear? जो गारंटी दे रहा है that is surety, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दी जा रही है that is creditor. Clear? यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? Now take some examples. Example number 4. Sandeep requests Chaman to lend 10,000 to Prashant and guarantees that Prashant will repay the amount within the agreed time, and if Prashant does not pay, he, that is Sandeep, will himself pay to Chaman. There is the contract of guarantee. What is the contract? संदीप ने कहा चमन से कि भैया प्रशांत को 10,000 दे दो, अगर नहीं देगा तो मैं चुकाऊंगा. Now who is giving the guarantee? Mr. Sandeep. Sandeep is called surety, in respect of whom guarantee is given, Mr. Prashant, and Prashant is principal debtor, and to whom the guarantee is given, it is Chaman, he is called creditor. Please read once again example number 4. ये क्लियर हो जाएगा आपको बच्चे? आई थिंक यहां तक क्लियर है. रीड कर लिया सब लोगों ने? एग्जाम्पल 5 पढ़ते हैं. S asks C to sell a table fan to P, and P agrees that if P fails to pay, he will pay. In this case, P's failure to pay, the S will recover. S will recover its money from. Sorry, it is printing error. Please correct it. In case of P's failure to pay, C will recover. C will recover its money from S. इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए. लास्ट लाइन में इन केस ऑफ पीस फेलियर टू पे, एस की जगह पे हो जाएगा सी.
will recover money from S. ये प्रिंटिंग एरर लगे बच्चों। तो एस ने सी को कहा कि तुम पी को एक टेबल फैन बेच दो, अगर पी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। अगर पी पेमेंट नहीं करता है तो एस किससे, सी किससे रिकवर करेगा, एस से रिकवर। क्लियर इतनी बात, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। नाउ in the case of contract of guarantee, there are three contracts between principal, debtor, creditor, and surety. See, what are the contracts? Contract 1, it is between A and B, that is principal, debtor, and surety. Second contract between surety and the creditor. Third contract between creditor and principal debtor. So there are three parties and three contracts. A का B से contract, B का C से contract और A का श्योरिटी से। क्लियर हो गया? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसका, प्रिंसिपल डेटर का श्योरिटी से, कि भैया अगर, देखिए क्वेश्चन टॉपिक क्या है कि श्योरिटी कहता है क्रेडिटर को, श्योरिटी सेफ टू क्रेडिटर प्लीज sell something or to give the advance to principal debtor. If he will not pay, I will pay. So there's contract between creditor and the surety, contract between creditor and principal debtor, and third one more contract between surety and principal debtor. The contract is that if the surety has to pay on behalf of principal debtor, then surety will have the right to claim from principal. भाई श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दी कि प्रिंसिपल डेटर अगर पे नहीं करेगा तो मैं करूं। प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया और श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के पास तो पैसा पहुंच गया। अब जो श्योरिटी ने पैसा दिया वो कहीं से रिकवर तो करेगा, वो किससे रिकवर करेगा, प्रिंसिपल डेटर से, उसके ऊपर सूट फाइल। यहां तक क्लियर? अब एक क्वेश्चन आया, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर इंग्लैंड। सर इन दिस केस व्हाट इज द बेनिफिट टू श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी? ये सब श्योरिटी को क्या बेनिफिट है सब काम करने का, रायता फैलाने का? तो श्योरिटी को बेनिफिट ये होता है चार्ज सम फीस या कुछ, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द गारंटी फॉर माय फ्रेंड, इट मे बी। यहां तक क्लियर? इट इज क्लियर एट दिस पॉइंट एवरीवन? चलिए, essentials of a valid contract of guarantee. First, principal debt. The purpose of the guarantee should be to secure the payment of debt. If there is no debt, there can be no valid guarantee. See the example, then I think there is no example. चलिए, जो गारंटी होनी चाहिए वो लोन के रीपेमेंट के, लायबिलिटी के रीपेमेंट के लिए होनी चाहिए। द गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, नॉट फॉर गिफ्ट। क्लियर? एंड द लायबिलिटी शुड बी एन एग्जिस्टिंग वन। इफ लायबिलिटी इज टाइम बार्ड, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इनवैलिड। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 6. A gives the guarantee to B for the payment of a time barred debt due from C. This is not a valid contract. The law says there should be liability and liability should be an existing. There is no case of contract of guarantee in case of time barred liability. Clear बच्चों? यहां तक एक क्वेरी है, this query from Mr. Sunil Kumar. If surety is also not paid, then against whom creditor will sue? Very good question. He says if the surety does not pay, creditor can file the suit against the surety also. So that case file कर सकता है surety के against. In case surety does not pay on the default by the principal debtor, so creditor has right to file the suit against the surety. Clear? Next point, consideration.
See, first we come to the example, then we will come on the topic consideration. Example 7. P, principal debtor. Actually, I have narrated P for principal debtor, C for creditor, and S for surety. Miss Shrabani Das, sir, what is the time bar? I think you have read in foundation time bar debt. Normally से 3 साल हो जाते हैं, तो वो टाइम बार्ड हो जाता है. आपने शायद पढ़ा होगा बच्चे. Mr. Abdul is asking, debt should be of money or it can be of any kind. देखिए, ये तो कहीं एक्ट में डिफाइंड नहीं है. इट कैन बी मनी और एनी काइंड, बट यू मे थिंक बोथ. पर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये उसके लिए होता है डेट के लिए, मनी के लिए. टाइम बट हो गया. शिवानी सेइंग, सर आपको भी स्पेक्स लग गए. हाँ बेटा, उम्र भी तो हो गई मेरी. चलिए, सी द एग्जांपल नंबर 7. P requests C to sell and deliver to him 100 kg of sugar on credit. As guarantees the payment, here C's promise to deliver the goods to P is sufficient consideration for S promise. Therefore, the guarantee is valid. Actually, हुआ क्या रहा है कि someone is एक question arise होता है. One question is arise कि what is the benefit? Someone is asked what is the consideration for surety? Contract between principal debtor and creditor. Creditor will supply the sugar and P will make the payment. S become the surety and guarantees that if P will not pay, I will pay. So what is the benefit of P? What is the consideration for P? So selling of goods by creditor to principal debtor is sufficient consideration. That is called indirect consideration for surety. Clear? So come to the point number 3. Contract of guarantee should be supported by some consideration, but need not be a direct consideration between the surety and the creditor. Any benefit received by the debtor is an adequate consideration to bind the surety. ये जरूरी नहीं है कि surety को कोई direct consideration मिले creditor से. Creditor के द्वारा principal debtor को benefit देना भी एक indirect consideration है surety. क्लियर यहां तक? ठीक है. The limitation at time bar if more than 3 years. Yes. ठीक है बेटा, ये तो क्लियर हो गई. Mr. Sushil Kumar Barik, what is the second conditions? What are the 2 conditions of essential for a valid contract? I think essentials are given in section 10 बेटा. Indian contract section 10 में आपने पढ़ा होगा foundation में essentials of a valid contract. So what we have just read कि what is the essential? First point. अच्छा, you are asking about this point. First point, there should be a debt. Debt should be existing. There should be consideration. It may be an indirect consideration. Third one, there should not be any misrepresentation or concealment. There should not be any misrepresentation or concealment in the contract of guarantee. यानी कि श्योरिटी को आप सारी बात बताएंगे, उससे कुछ छुपाएंगे नहीं. See the example number 8. As guarantees to C payment for 100 quintals of wheat to be supplied by him to P at market price. So what is the contract? As guarantees to C for payment of 100 quintals of wheat to be supplied by him to P at market price. तो क्या कहा इसने गारंटी दी सी को कि आप 100 क्विंटल गेहूं P को मार्केट प्राइस पर दे दीजिए और पेमेंट की गारंटी मैं दे रहा हूं. Now P privately agreed that P should pay ₹10 per quintal extra to C. P ने अपने आप से कॉन्टेक्ट कर लिया सी से कि भैया मैं 10 रुपए और दूंगा, बस मेरा काम कर दूंगा. Which was not in the knowledge of S. Surety को पता ही नहीं था. Surety has no knowledge about this contract of ₹10. Now this is the concealment of fact, and S will not be liable as surety. So every fact should be in the knowledge of surety. Clear?
Pranav is saying, sir, this is also following section 2 clause D. Yes, definitely. Consideration के मामले जो आप पूछ रहे थे, point number 3, section 2 clause D will be applicable. Yes, बिल्कुल सही. A contract of guarantee may be written or oral. We have discussed. Joining of other co-sureties. What is this point? Section 144. बच्चों यहाँ तक बोर तो नहीं हो रहे हो ना? समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो बस लॉ एंजॉय करो यार. लॉ सबसे बढ़िया कुछ नहीं है जीवन में. 6 point. Joining of the other co-sureties, section 144, where a person gives the guarantee upon a condition that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. Suppose there is a contract that there will be two sureties, two co-sureties, S1 and S2. S1 says, okay, my guarantee is there only if S2 will join. So the liability of S1 will arise only if S2 join this contract. S2 is also saying, I am just ready to join the contract. I am just ready to be a surety in this contract. सेक्शन 144 कह रहा है कि बच्चे अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि एक को श्योरिटी ज्वाइन करेगा, एक श्योरिटी है सपोज S1 है और उसमें ये लिख दिया कि S2 भी ज्वाइन करेगा तभी मैं श्योरिटी रहूंगा भाई, तभी मेरी गारंटी है. तो उस केस में जब तक S2 ज्वाइन नहीं करेगा S1 की लायबिलिटी अराइज नहीं. क्लियर? इफ श्योरिटी इज डेड, तो कॉन्ट्रैक्ट जब श्योरिटी मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट में खत्म हो जाएगा. लेकिन हाँ, अभी रुक जाओ, अभी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक कि व्हाट इज द पोजीशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ श्योरिटी. डोंट वरी, वी विल डिस्कस. कोई डाउट नहीं है बच्चों को? शिवानी के लिए सर कोई बुरियत नहीं है? ओके, वेरी गुड. हाशिर सर सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड. प्रियंका सर एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर. ओके, कोई बोर नहीं हो रहा. Sunil is saying, sir, in foundation I watched only recorded classes. Now I attended in live. It is more interesting. I think you should say thank you to ICI. ICI BOS is taking very much effort for all of you. बहुत मेहनत का काम है क्लासेस को अरेंज करने का आप लोगों के लिए. तो आई थिंक आपको ICI, सभी लोगों को ICI को एक बार थैंक्स बोलना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो क्लियर हो गए अपने को पॉइंट सारे? अब आते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ गारंटीज. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गारंटीज, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी. Piyush is saying, sir, I love to find loopholes in law, though I have not find yet. कोई बात नहीं बेटा. Mr. Abdul is asking, sir, if surety 2 has collude with creditor, then surety 1 will not become liable. Yes. Pranav, if sureties are severely contracted like 50-50 percentage, then जो डिसाइड हुआ दैट इज उसकी जितना शेयर डिसाइड हुआ उसी के अकॉर्डिंग होगा. इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं. मनोज इज सेइंग थैंक यू ICI, वेरी गुड. सपना ये सब क्लियर हो गया. ठीक है, सुनील को क्लियर हो गया. ओके, तो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी. द टू टाइप्स ऑफ गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी जस्ट फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन एंड कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस. Guarantee, specific guarantee means guarantee which extend to a single debt or specific transaction, and surety liability comes to end when the guaranteed debt is duly discharged. एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए गारंटी होगी तो वो कहलाएगी स्पेसिफिक गारंटी. If that liability has been paid off, the contract is ended. In case of continuing guarantee, means guarantee which extends to a series of transaction, number of transaction. Surety liability
continues until the revocation of guarantee. जब तक वो रिवोक नहीं की जाएगी आपस में तय करके, until the parties revoke this guarantee, the continued guarantee will be continued. Clear इतनी बात? I think this slide is not required. See the example of continuing guarantee. Let's say Avdesh guarantees Mukesh, a canteen owner, to supply lunch of his to his employee for time to time up to the value of 10,000. Now this is the continuing guarantee given by Avdesh, and he is accordingly liable to Mukesh to the extent of 10,000. अवधेश ने मुकेश जो कैंटीन ओनर है उससे कहा भाई साहब मेरा एम्प्लॉई आपके खाना खाने आएगा, 10,000 रुपए तक का खाना खाएगा, जब तक हो जाए इसका तब तक इसको पेमेंट आप देते रहे, 10,000 गारंटी में लेगा. तो दिस इज द कंटिन्यूइंग गारंटी, सीरीज ऑफ गारंटी. क्लियर? आई थिंक स्पेसिफिक गारंटी क्लियर हो गया, कंटिन्यूइंग क्लियर हो गया. डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द क्लास ऑफ फाउंडेशन. अगर बताओ, whenever the question of differences is asked, जब भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस का पूछने के लिए, तो what you have to do, you have to answer in 3 columns. 2 columns for the topics in which you have to find the difference, and 1 column is for basis. This is very important. ठीक है? So basis parties, in case of indemnity there are 2 parties, in case of guarantee there are 3 parties. Contract, 1 contract, 3 contract. आई थिंक मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार रीड करना बच्चों, ये वही है जो अभी तक हमने डिस्कस किया. तो मिस्टर इंग्ले आप क्लियर हो जाएगा बच्चे आपको ये. मिस श्रीलक्ष्मी इज आस्किंग सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन द कंसेप्ट ऑफ co-sureties. ओके बेटे, co-sureties मीन some more than 1 surety for single contract. Let's say there are 2 sureties S1 and S2. अब S1 says my liability will arise, my guarantees will arise only if S2 will join. If S2 does not join as a guarantor, the liability of S1 will not. Clear इतनी बात? और कोई क्वेरी हो तो पूछो बच्चों. So this is the nature and extent of surety's liability. Surety की liability क्या है? Any query? Okay. So law says the liability of surety is co-extensive with that of principal debtor. Means the liability of surety is same as liability of principal debtor. यानी कि जिस चीज के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा उसी के लिए श्योरिटी भी लायबल होगा. द श्योरिटी इज लायबल फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लायबल. However, the contract of guarantee may provide otherwise. It means in the contract of guarantee there may be some other point that, for example, the transaction is for 1 lakh and guarantor says sir my liability is only for 70,000. So this should be specifically be provided in the contract. क्या हुआ बच्चे कि कॉन्ट्रैक्ट जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होगी उतनी श्योरिटी की होगी, बट लॉ सेज कि ये पार्टियां आपस में तय करके कुछ और भी डिस्कस कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल जो ट्रांजैक्शन है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में वो 1 लाख रुपए का है, राइट, और श्योरिटी सेज दैट माय गारंटी इज ओनली फॉर 70,000. ठीक है. एग्जांपल नंबर 10, X gives guarantee to Y for the payment of debt of rupees 10,000 due from Z. On due date, Z could not make the payment, but an unknown person made a payment of rupees 2,000 to Y on behalf of Z. Now, what is the liability of Z remaining? Is only for 8,000. By X, Y have to receive the payment of 10,000 from Z, but Z could not make the payment. But an unknown person make the payment of 2,000 on behalf of Z. Now Z liability is only for 8,000. So the liability of surety is same that of the principal debtor. Hence,
In this case, the liability of X, that is surety, is rupees only 8. X ने गारंटी दी, X श्योरिटी था, Y को कि भाई अब 10,000 रुपए जेट को दे दो, जेट विल पे, अगर वो नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। ड्यू डेट पर जेट पेमेंट नहीं कर पाया, लेकिन एक अनजान फरिश्ता आया और अनजान फरिश्ते ने जेट के बिहाफ पर 2,000 रुपए वाई को दे दिए, तो जेट की लायबिलिटी तो 8,000 बची। तो एक्स की लायबिलिटी कितनी होगी? जितनी जेट की होगी। जेट को कितना पेमेंट करना बाकी है? 8,000, तो एक्स को भी 8,000 की ही लायबिलिटी होगी। क्लियर? को एक्सटेंसिव मीन सेम दैट ऑफ, तो पूछ रहे हैं सर, मनोज पूछ रहे हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को एक्सटेंसिव? इज सेम दैट ऑफ, लिखा हुआ है मैंने आगे बेटा। The liability of surety arise only on default by the principal. Liability surety जब ही arise होगी जब principal debtor पर default। Where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, the liability of surety also ceases. Suppose there is a contract between principal debtor and the creditor, and that is some lacuna or defect in the document. That's why the liability, there was no liability on behalf of principal debtor. So surety will also not be liable. कि डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ थी, डिफेक्ट था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर की कोई लायबिलिटी नहीं। जब प्रिंसिपल डेटर की कोई लायबिलिटी नहीं है तो श्योरिटी की भी लायबिलिटी नहीं। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, a creditor may choose to proceed against the surety first unless there is an agreement to the contract. Means liability arises only the default by principal debtor. Now creditor may directly file the suit against the surety before filing the suit against the principal. It means that when the defaulter when principal debtor makes the default, the ball is in the court of creditor. Creditor may choose to directly file the suit against the surety. Clear? One point, sir, continuing guarantee again. Okay. कंटिन्यूइंग गारंटी इज फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, कि भैया आप 1 महीने तक ये काम करते रहिए, इसी गारंटी में देता हूं, अगर पेमेंट नहीं हुआ, ये कंटिन्यूइंग गारंटी होगी। हर्षित इज सेइंग सर अगर श्योरिटी 2 अपनी गारंटी विड्रॉ कर ले, देखो श्योरिटी 2 हो या श्योरिटी 1, प्रैक्टिकली पॉसिबल, लॉजिकली सोचो। सपोज मैं गारंटी दे रहा हूं बैंक को, मेरे दोस्त को लोन दे दो, ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, क्या बाद में मैं गारंटी विड्रॉ कर लूंगा? नहीं हो सकता ना, तो बैंक डिसाइड करेगा। नहीं, अगर S2 ने गारंटी दी है तो गारंटी रहेगी। ठीक है, एक क्वेरी है इनके लास्ट पॉइंट की, वो अभी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में बेटा। तो दिस इज द टाइम फॉर सुपर ओवर 2। जब तक क्वेरी पूछो मेरे बच्चों, फिर मैं सुपर ओवर 2 लूंगा। पूछो क्वेरी हो तो, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ? किसी को नींद तो नहीं आई? आनी भी नहीं चाहिए। अगर आज क्लास में नींद आ गई तो एग्जाम वाले दिन क्लास में नींद का ही ऑप्शन है, और कोई है ही नहीं। कोई क्वेरी? फिर मैं लेट्स स्टार्ट द सुपर ओवर 2। देखिए, अगर आपने गारंटी में शिवानी इज आस्किंग सर इट मींस गारंटी कैन नेवर बी विड्रॉन। देखिए, अगर आपने if there is a specific case of specific guarantee, you cannot withdraw. In case of continuing guarantee, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, but I am just giving the brief idea. In case of continuing guarantee, you can withdraw, but you will not be liable for future transaction only. You will still be liable for the transaction on which your guarantee has already been given. Mr. Abhishek Pandey is asking, sir, guarantee can be also in oral form? Yes, contract may be written or oral. Manoj is saying, sir, I am very much awakened. ठीक है, okay, let's start the super over 2. अब की बार ध्यान से करना, सब ध्यान से समझना, रिप्लाई आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, और 1 by 1 नहीं। एक क्वेरी है मिस्टर पीयूष की,
Sir, can we say co-surety is like where there is any insurance by more than one insurance? You can say insurance. A guarantee which extends to a series of transactions is called special guarantee, continuing guarantee, specific guarantee, none of the above. तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार. Second question. A, in consideration that B will employ C in collecting the rent of B's jamindari, promises B to be responsible to the amount of rupees 5,000 for the due collection and payment by C of those rents. This is restricted guarantee, continuing guarantee, limited guarantee, none of the above. My kids, मेरे बच्चों, you not need to send the answer one by one. You have to send all the answer in one shot. ठीक है? Third question. Guarantor means surety, principal debtor, all the above, none of the above. अभिषेक बेटा क्या हुआ? ये तो आपके यहाँ से कुछ वन प्रिंट आपके प्रेस हो रहा है, बार बार चेक करो. The contract of guarantee is a contract which a person performs the promise and discharge of the liability of contractor, stranger, third person, none of the above. You have to select the best answer. In a contract of guarantee for whom guarantee is given is called surety holder, principal debtor, both A and B, none of the above. For whom guarantee is given. The guarantee, last question, the guarantee is valid even if principal debtor incompetent to contract, surety, both A and B, none of the above. कह रहा है कि अगर इनमें से ए या बी में से या दोनों अगर इनकॉम्पिटेंट है, सपोज माइनर है, तो वैलिड होगा कि नहीं होगा. किसके कौन सा पर्सन अगर इनकॉम्पिटेंट है तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आंसर्स, और इसके बाद वी विल हैव द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. फिर आप लोग चाय वाय पीना आराम से, 10 मिनट बाद फिर मिलेंगे अपन और इस टॉपिक को आज खत्म कर देंगे. तो पहला आंसर है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कंटिन्यूइंग गारंटी. तो बच्चों वाला क्वेश्चन था. दिस इज अगेन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. रेस्ट्रिक्टेड गारंटी तो कोई शब्द ही नहीं है बच्चे. मतलब लॉ की लैंग्वेज में से, लॉ की नजरों में ये कोई शब्द नहीं है रेस्ट्रिक्टेड गारंटी. ठीक है ना? गारंटर मींस श्योरिटी,
The contract of guarantee is a contract third person. Fifth point, in contract of guarantee for whom guarantee is given is called principal debtor. And last one is the contract guarantee is valid even if it is if principal debtor is incompetent. ये actually क्या है? Some of you say, sir, the contract with minor is void ab initio, but it is a specific case. If principal debtor is minor, then surety will be primary liable. क्योंकि ultimate liability surety की है अगर principal debtor नहीं पे करता है तो. क्योंकि creditor in case of contract with the minor and the surety is major, then creditor can file the suit only against the surety. So contract is valid if in case of guarantee if the principal debtor is minor or incompetent because the final responsibility is of surety. क्लियर इतनी बात? तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो अपन स्टार्ट करते हैं. कौन कौन अच्छा बच्चा है हमारा? बेटे आप लोग ऑप्शन भी लिख दिया कीजिए साथ में नंबर का ऑप्शन का जैसे. ठीक है, ठीक है. नहीं, Miss Jyoti is saying, Miss Jyoti Jai saying, sir, my answer reaching. Yes, बेटा आपके आंसर मिल रहे हैं मुझे. अभी तक तो किसी के सारे आंसर सही नहीं आए. Finally, we found the first one who has given all the correct answer is Miss Priyanka. Congratulations, beta. Geet is asking about question number 4. Geet is asking, sir, answer for 4 is principal debtor, how third party. आपने शायद डेफिनेशन नहीं देखी बेटा, ध्यान से सेक्शन 126 की डेफिनेशन देखिए एक बार, आपको आंसर मिल जाएगा. सेक्शन 126 की डेफिनेशन एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा. Pranav is saying, sir, it is only in case of minor or any incompetent person like unsound mind. Yes, any incompetent person. Okay. Mr. Abdul Qadir has given all the correct answer. तो ये तो अब आंसर करेक्ट हो गए. एक जो बच्चे की प्रॉब्लम थी मिस्टर गीत चौहान की, तो आई थिंक आप एक बार 126 सेक्शन को देखिएगा, तुम्हें लिखा हुआ है तो आपको मिल जाएगा कि वो वहां पर थर्ड पर्सन. ठीक है, तो एट दिस प्लेस वी विल हैव द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. उसके बाद अपन ज्वाइन करेंगे और वी विल डिस्कस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी एंड
definitely we will finish this topic. So Manish ji, please give the break of 10 minutes.
थैंक यू। मिस्टर मनोज सर, कितने सुपर ओवर हैं इस मैच में? कितने सुपर ओवर हैं इस मैच में बेटा? एक और है। Muhammad Aslam is saying, sir, it means principal debtor may be minor, but surety cannot be the same. Exactly. और बोले तो सही पकड़े हैं। मोहम्मद असलम सिंह, सर आई स्कोर 12 आउट ऑफ 12, बट बेटा भेज भी दिया कर मुझे, मैं भी देख लेता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5. हु इज आस्किंग? मिस्टर इंग्ले। ओके, इन केस ऑफ गारंटी फॉर हुम गारंटी इज गिवन, गारंटी किसके लिए दी जाती है? इट इज ऑलवेज फॉर प्रिंसिपल डेटर। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। Now basically law defines 3 modes of discharge: by revocation, by conduct of creditor, on invalidation of contract of guarantee. We will discuss one by one. By revocation में there are 3 ways to discharge of surety by revocation. First is by notice, by surety is that, by novation. Remember novation, discharge of contract. कुछ याद है बच्चों? Second, by conduct of creditor, by variance, change in terms, by release of or discharge of principal debtor, composition, compromise with principal debtor, impairing मतलब reduce, surety's remedy, on invalidation of contract of guarantee, guarantee obtained by misrepresentation, guarantee obtained by concealment, guarantee on contract that creditor shall not act it until co-surety joins. Right? So we will discuss these concepts one by one. First is discharge of surety by revocation. Okay. So first one is by notice. By notice means by informing. भाई इन्फॉर्म कर दिया कि भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया. Whether it is possible, so law says in case of specific guarantee, a specific guarantee cannot be revoked once the liability is incurred. एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर तो पीछे हट ही नहीं सकते. If you are given the guarantee for a specific purpose, specific contract, specific transaction, then guarantee cannot be revoked. But in case of continuing guarantee, guarantee can be revoked for future transactions. It means जो transaction already incurred, surety will be liable for these transactions. He may revoke the guarantee for future transactions. Right? See the example. Mr. Vedant is saying, sir, yes, sir, novation means, I guess, the formation of a new contract. Yes, you have read in CA Foundation. Chatan is saying, novation, rescission. Yes, you got remembered. Example number 11, as guarantee C for the transaction to be done between C and P for next month. After 5 days, S informs C and P that he is not surety anymore. Now guarantee is revoked for future transaction, but S is still liable as surety for transaction done during previous 5 years. Clear? कि एफ ने गारंटी दी सी को कि जो भी अगले महीने में आपके और पी के ट्रांजेक्शन होंगे उसकी मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटर हूं.
5 दिन बाद एस ने कहा भैया मैं नहीं दे रहा गारंटी, तो गारंटी खत्म। लेकिन जो पिछले 5 दिन में कॉन्ट्रैक्ट हो गए उसकी गारंटी तो रहेगी। तो इन सिंपल लैंग्वेज स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड इफ लायबिलिटी incurred, but in case of continuing guarantee can be revoked only for future transactions. For past transactions which are under the guarantee will be liable, the liability of surety will be there. Clear? प्रियंका अब तो भूल गए, नोवेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेम पार्टीज। बेटिया भूल गया, नोवेशन में पार्टियां चेंज हो सकती हैं, ऑल्टरेशन में नहीं हो सकती। याद आया? चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर नोटिस वाला। सेकंड पॉइंट, डेथ ऑफ श्योरिटी। On the death of surety, continuing guarantee is automatically revoked in case of future transaction, but his estate remain liable for the past transaction which have already taken place before the death of the surety. Death से पहले अगर जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उसके लिए जो श्योरिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी एस्टेट है, वो लायबल रहेगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12, as guarantees C for the transaction to be done between C and P for the next month after 5 days S died. Now guarantee is revoked for future transaction, but S state will be liable for transaction done during the previous 5 years. पिछले 5 दिन में जो हुए उसके लिए जो उसकी संपत्ति है श्योरिटी की, वो लायबल होगी। तो दोनों पॉइंट में किसी को डाउट बाय नोटिस या बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, प्लीज आस्क। पूछ लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, बाय नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, when an old guarantee is substituted by a new one, the old guarantee is automatically discharged. As guarantee C for the payment of supply of wheat to be done by C and P for next month after 5 days, the contract is changed. Now, as guarantee C for the payment of the supply of rice to be done by C and P for the rest of the next month. क्या आ गया बच्चों? wheat की जगह पे क्या आ गया? राइस आ गया। The guarantee is revoked for supply of wheat, but S is still liable for the supply of wheat done during the previous 5 days. तो पिछले 5 दिन में जो हो गया wheat का ट्रांजेक्शन, उसके लिए तो लायबिलिटी नहीं। क्लियर? ओके, हर्षित क्लियर कह रहे हैं। हर्षित क्लियर हो गया, आलोक को हो गया, पढ़ना वेरी गुड, इंग्ले वेरी गुड, सुनील इज क्लियर, and Uday is saying sir these are just change in words, all the basic is same as taught by you in the foundation. बेटा मैं तो लॉ चेंज कर ही नहीं सकता, आई एम जस्ट टीचिंग द लॉ। तो लॉ जो रहेगी वो तो वही की वही रहेगी, ठीक है ना? तो these 3 points I think there should not be any problem in these 3 points, by notice, by death of surety and by novation. Second category, discharge of surety by conduct of creditor, right? First is variance in terms of contract, section 133. जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, उसकी अगर टर्म्स चेंज हो जाती हैं, then surety will not be liable. If the terms of contract between principal debtor and creditor change without the knowledge of surety, the surety will not be liable. Before discussing, I am just taking a problem. देखिए, Mr. Abhishek is asking, sir, please suppose if the guarantee is oral and after some time surety is withdrawn his guarantee orally, so can we sue against surety in this case? देखिए,
एक्चुअली क्या है ना, द लॉ सेज द गारंटी मे बी रिटन और ओरल, एंड व्हाट विल हैपन, दिस विल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस. So according to law, your answer of your query is yes. ठीक है. Second problem is from Mr. Abdul Qadir. Sir, in example 11, there was no transaction in past 5 days, then S will not be liable. Yes, अब कोई transaction ही नहीं हुआ continuing guarantee में, और death हो गई या उसने notice दे खत्म कर दिया, तो liability आएगी नहीं. ओके, ज्योति सेइंग से क्लियर हो गया. ओके, शिवाली सेइंग क्लियर हो गया. ओके, Chetan is saying, sir, means in all cases what you have done before notice, death, novation, you will be liable for that part. Yes, बिल्कुल sir. In case of continuing. ठीक है. Okay. So we are discussing on section 133, variance in terms of contract, section 133. If the subsequent to the formation of contract of guarantee, any variation is made in terms and conditions of contract of guarantee, and such variation is made without the consent of surety, then surety shall be released for such transaction as take place after such variation. It means if anything done without the knowledge of surety, surety will not be liable. Surety कहता है मुझसे बिना बताए कुछ करोगे तो भैया मैं लाइबल नहीं होऊंगा, तुम जाओ तुम्हारा काम जाने. सीधा एग्जांपल, C enters in a contract to supply 100 tons of timber to P, which was lying in the godown of C at Shimla. S gives guarantee to C for the payment. यहाँ तक कोई सब चीज ओके है. Thereafter, P agrees to receive timber lying at godown at Solan at the request of C. Now they change in terms and condition of the contract, but no consent was taken from S, that is surety, for such change. Hence, surety is discharged. He will not be. Surety को बिना बताए कुछ करोगे तो वो लाइबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, release or discharge of principal debtor. If surety, the surety is discharged if creditor enters into a fresh or new contract with principal debtor by which principal debtor is released, or does any act or omission, the legal consequence of which is discharge of principal debtor. Simple चीज. If creditor release principal debtor, surety will also be released. अगर creditor ने कहा principal debtor से जा तुझे माफ किया, तुझसे पैसा नहीं मांगूंगा, तो फिर surety भी liable नहीं होगा. See the example number 15. P contracts with for a fixed period, fixed price to build a house for C within a stipulated time. C supplying the bricks as guarantees P's performance of the contract. C did not supply the bricks to P as is discharged from the surety sale. क्या है क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल क्या है. P ने कॉन्ट्रैक्ट किया C से कि वो बिल्डिंग बनाएगा C के. C P को ब्रिक्स सप्लाई करेगा और S ने इस कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी ली P की, जब P काम करके दे देगा. लेकिन C ने ब्रिक्स सप्लाई ही नहीं की P को, तो S की गारंटी खत्म. पर जब C ब्रिक्स सप्लाई कर देता P को, then P will be able to start the construction, then guarantee will be there. If C has not supplied the material, P could not start the work, hence S will also be discharged from the liability. इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को? पूछो बच्चों. चलिए. Composition with principal debtor means compromise.
adjustment. The surety is discharged if the creditor makes a composition with or gives time to or agrees not to sue the principal debtor without obtaining the consent of surety. Means there was a composition between principal debtor and creditor, and suppose giving extra time for payment, but without the knowledge of surety. Surety will not be liable. Section 135. Example number 16. C sells AC to P on which payment to be made after 2 months as guarantee for the same as surety. On due date, P requests C to extend the time for payment by 15 days. C allows, but without informing S. Here, S will be discharged. Surety will be discharged. Clear? कि अगर कोई सिंपल सा फंडा है कि आप प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो भी बात होगी वो श्योरिटी की नॉलेज में होगी. श्योरिटी अगर तैयार नहीं है तो उसकी लायबिलिटी भी खत्म. ठीक है, चुपचाप आप कुछ नहीं कर सकते आपस में मिलके. राइट. वन इंपॉर्टेंट टॉपिक and maybe the question from this point, exception for point number C. Which is the point number C? This is the point number C, section 135, the exceptions of section 135. This is, please listen carefully. This is an important topic and the question may be asked from this point. Surety not discharge when the agreement made with third person to give time to principal debtor. Okay, Sunil, I will take your problem after this point. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम लेते हैं बच्चे. Surety not discharge when agreement made with third person to give time to principal debtor. Third person ने time दे दिया, मतलब agreement, the contract was between P, C and S and time is given by Z. तो C क्या value? Nothing. If in the previous example P requests Z, what was the previous example? C. P ने time मांगा C से 15 days का, C ने allow कर दिया without informing S. S will not be discharged. But what is this example says? If in the previous example P requests Z to extend the time for 15 days, S will not discharge. Z से request किया उसने, Z कौन है? कोई भी नहीं है, थर्ड पर्सन है, चलता हुआ आदमी. Then in this case, S will not discharge because there was no hidden agreement, hidden terms and conditions between P and C. Creditors' forbearances to sue does not discharge surety. Section 137. What it says? See the example. C sells AC to P on which payment to be made after 2 months as guarantees for the same as surety. On due date, P did not make the payment. C did not sue P for next year. Here, S will not be discharged. लॉ ऑफ 137 कह रहा है कि अगर मान लीजिए क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के ऊपर सूट फाइल नहीं किया तो इससे ऐसी लायबिलिटी खत्म नहीं. क्लियर? One query from Mr. Sunil Kumar. Sir, what is the difference between A and point C? C. A, variance in the term, section 133, and C says compromise. This is a specific point. ठीक है, उसे अलाउ कर दिया, टाइम कर दिया, चेंज ऑफ टर्म की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिन टर्म्स पे हुआ था उन्हें चेंज कर दिया. ठीक है, बहुत थिन लाइन है डिफरेंस की. एंड मिस्टर चतन इज सेइंग Z is not a party to the contract, so he can't extend the time. Yes, exactly. You are right, बेटा. तो ये पॉइंट क्लियर हो गए एग्जाम्पल 18 तक मेरे ख्याल से. सर प्रियंका इज सेइंग सर कैन यू रिपीट द एक्सेप्शन इन हिंदी. ठीक है बेटे,
सेक्शन 136 कह रहा है कि जो पॉइंट नंबर सी में हमने पढ़ा था कि एक्सटेंशन दे दिया क्रेडिटर ने, लेकिन अगर एक्सटेंशन की थर्ड पर्सन ने दे दिया, चलते आदमी ने दे दिया, तो उसकी क्या वैल्यू है भाई? कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी पी सी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी है। थर्ड पर्सन आई करा रहे, मैं दे देता हूँ टाइम, उसकी कोई वैल्यू नहीं, श्योरिटी लायबिलिटी खत्म नहीं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया, अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी लायबिलिटी खत्म हो गई, श्योरिटी तो लायबल रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डी पॉइंट, इंपेयरिंग श्योरिटी रेमेडी। इंपेयरिंग कह सकते हैं आप छेड़छाड़ करना या उसको कम करना, रिड्यूस। इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्रेडिटर नॉट टू डू एनीथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी। भैया ये क्रेडिटर की ड्यूटी है कि श्योरिटी के राइट से छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी मैं डिस्कस करता हूं आपकी प्रॉब्लम। इफ द क्रेडिटर फेल्स टू प्रोटेक्ट द श्योरिटी राइट, द श्योरिटी डिस्चार्ज। देखो अगर दो चीजें हैं, अगर श्योरिटी के राइट्स में कुछ कमी हो गई क्रेडिटर के कंडक्ट से, क्रेडिटर के द्वारा, देन श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। सीधा एग्जाम्पल, सी टेक्स अप पी एज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस समझते हैं? लर्निंग while अर्निंग while लर्निंग एज ए लर्नर on a fidelity guarantee given by S. C promised on this part that he will at least 1 month see that P make up the cash. C omished to see this done as promised and P embezzled. S is not liable to C on this guarantee. क्या एग्जाम्पल है? प्लीज रीड केयरफुली। प्लीज एग्जाम्पल पढ़े बच्चों दोबारा। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि सी ने पी को अपने यहाँ अप्रेंटिस रखा, जिसकी गारंटी किसने दी? एस ने, कि ये जेन्युइन रहेगा, बदमाशी नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा। और सी ने प्रॉमिस किया कि वो 1 महीने तक रेगुलर चेक करेगा वो कैश को प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा है। सी ने चेक नहीं किया और पी ने मौका उठा के क्या किया? कैश की हेरफेरी कर दी। तो एस की लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सी ने अपनी टर्म्स को पूरा नहीं किया। तो श्योरिटी के राइट थे कि आपको सी को चेक करना है कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो नहीं किया, तो एस की लायबिलिटी खत्म हो जाए। क्लियर इतनी बात? एक क्वेरी है प्रणव की, सर सेक्शन 136, if the third person is pursuing the C and C extended, same thing। अगर थर्ड पर्सन ने सी को परस्यू किया कि भैया इसे टाइम दे दो, इसको टाइम दे दो प्रिंसिपल डेटर को, और सी मान गया, श्योरिटी को पता ही नहीं है, तो श्योरिटी लायबिलिटी खत्म। अल्टीमेटली टाइम किसने अलाउ कर दिया? सी ने अलाउ कर दिया। ओके प्रियंका, क्लियर हो गया? अगेन अब्दुल, if the creditor has filed suit against principal debtor but the procedure has not made in the court, yet will surety discharge? No, surety will discharge only after the payment of liability towards creditor. Alok, just like in articleship, you may say yes. Which are the rights of surety, Mr. English? Beta, just wait, we will discuss. आज ही पढ़ेंगे हम इसके राइट श्योरिटी के। ओके मोहम्मद सिंह, यस सर, क्लियर? ओके क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर हो गया इतना? नाउ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट पॉइंट, guarantee obtained by misrepresentation. Remember misrepresentation? याद आया कुछ?
सेक्शन नंबर 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या तुम्हें याद है? So, guarantee obtained by misrepresentation, section 142. The section 142 says the surety will be discharged if the guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by creditor concerning a material part of the transaction. Material is the important part. See the example. C sells AC to P on the misrepresenting that it is made of copper while it is made of aluminum. Aluminum as guarantees for the same as surety without the knowledge of the fact that it is made of aluminum. Here as will not be. भैया धोखे से जो बेचोगे तो गारंटी ले ली आपने, फिर तो आप लायबिल होंगे नहीं। मैंने बताया सेक्शन 18 चतन जी को याद आ गया, सेक्शन 17 और वेरी गुड, गुड बेटा, सब जगह हुए। अच्छा लगता है जब आप लोगों के जवाब आते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं ना, लगता है कि आप लोग भी जगह हुए हैं। चलिए सेक्शन नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 143, 142 पढ़ लिया, 143 गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, छिपाना, फैक्ट्स को छिपाना, वहां था झूठ बोलना, यहाँ छिपाना, राइट। द श्योरिटी डिस्चार्ज if the guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to the material circumstance. जो इंपॉर्टेंट चीज छुपा के आपने गारंटी दी तो श्योरिटी विल नॉट बी। as guarantees to C payment of 100 quintals of wheat to be supplied by him to P at market price. We have discussed this example in previous time. P privately agreed that P should pay rupees 10 per quintal extra to C, which is not in the knowledge of S. Now there is concealment of fact from S, hence surety will not be liable. श्योरिटी को बताया ही नहीं और 10 रुपए उन्होंने अलग से पैसा एक्स्ट्रा कर लिया, तय कर लिया, तो पता श्योरिटी को लायबिलिटी खत्म। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट 144 guarantee on contract that creditor shall not act on it until co-surety joins. मतलब एक co-surety ने कहा creditor से, the co-surety has contracted with the creditor that you take action, you give the money or you may sell the goods to principal debtor only if second co-surety, let's say S2, will join the contract. And in this case, S2 has not joined and creditor has made the payment to principal debtor, then S1 will not be. भाई कॉन्ट्रैक्ट में तय हो गया, क्या तय हो गया कि कोई श्योरिटी ने कहा भैया मैं को श्योरिटी हूं, क्रेडिटर से कहा जब तक दूसरा वाला लेट्स से S2 ज्वाइन नहीं कर लेगा तब तक आप इसको प्रिंसिपल डेटर को ना तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। अब S2 ने ज्वाइन नहीं किया, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर ने ट्रांजेक्शन कर लिया प्रिंसिपल डेटर के साथ, तो S1 की भी लायबिलिटी नहीं। Where a person gives a guarantee upon a contract that creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not. Clear? See the example number 22. S1 guarantees C for the payment to be done by P to C on the condition that S1 will be liable only if S2 joins him for such guarantee, and S2 does not give the consent, S1 will not be liable. S1 ने guarantee दी C को for the payment to be done to P, but condition लगा दी थी, इधर मेरी गारंटी जब भी लगेगी जब S2 ज्वाइन कर लेगा, S2 ने हानि करी तो S1 की भी कोई लायबिलिटी नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों? यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ही इतना आसान।
नेक्स्ट पॉइंट, अब आ गया पॉइंट राइट्स ऑफ श्योरिटीज। किसने पूछा था मुझसे? मिस्टर इंग्लैंड ने। सर राइट ऑफ श्योरिटीज, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं तुम्हारी क्वेरी ले लूं, बच्चों कोई क्वेरी तो बताओ मुझे। मोड ऑफ रिवोकेशन में कोई क्वेरी हो तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जितना हम पढ़ रहे हैं ना आज, इस एक्ट को बच्चों आज रात को रिवाइज करके सोना, और सुबह उठ के समरी जो मैं दे रहा हूं 5 मिनट उससे रिवाइज कर लेना, ये पूरा एक्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो भाई, राइट्स की बात करते हैं। राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट 3 पर्सन, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट को श्योरिटी। 3 लोगों के अगेंस्ट राइट है भाई श्योरिटी के, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट और को श्योरिटी के। मेरा कैमरा तो नहीं क्यों गड़बड़ कर रहा है बार बार? So first is against principal debtor, surety has 2 rights: right of subrogation, right of indemnity. Against creditor, he has 3 rights: right to security, right to set off, right to share reduction. And against co-surety, it has 2 rights: right to claim contribution equally, right to claim contribution only agreed sum. ठीक है। First, rights against the principal debtor. Right of subrogation. Actually, what is this right? This right says that after the payment of liability by surety to creditor, the surety will put on the shoes of creditor against principal debtor. इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया और श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ा, तो श्योरिटी क्रेडिटर के जूते पहन लेता है। इसका मतलब है कि जो राइट क्रेडिटर के होंगे वही राइट ऑफ श्योरिटी। Section 140 says, on payment of debt, the surety shall be entitled to all the rights which the creditor could claim against the principal debtor. कि पेमेंट लाइबिलिटी के पेमेंट के बाद श्योरिटी के वही राइट होंगे जो क्रेडिटर के राइट होंगे, ठीक है। सी द एग्जांपल नंबर 23. Raju has taken a housing loan from Canara Bank. Pappu has given guarantee for the repayment of such loan. Besides, there was a condition that if Raju does not repay the loan within time, the bank can auction his property by giving 15 days notice to Raju. And on the due date, Raju does not repay, hence Pappu, being a surety, has to repay the loan. Now Pappu can take the house from bank and has a right to auction the house by giving 15 days notice to the. क्या है एग्जाम्पल? राजू ने एक हाउसिंग लोन लिया कैनरा बैंक से, पप्पू ने उस लोन की गारंटी दी और एक क्लॉज लिखा गया कि अगर राजू लोन को नहीं चुका पाया तो बैंक को राइट है कि बैंक उस घर को ऑक्शन कर सकता है 15 दिन का नोटिस देकर। ड्यू डेट पर राजू ने पेमेंट करने से मना कर दी। जब पेमेंट नहीं कर पाया, पप्पू ने, क्योंकि गारंटर था, श्योरिटी था, उसको लोन का रीपेमेंट करना पड़ा। अब पप्पू के पास राइट है कि वो भी इस घर का ऑक्शन कर सकता है राजू को 15 दिन का नोटिस देकर। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ ये एग्जांपल बच्चों? बताइए। सेकंड पॉइंट, right of indemnity, section 145, compensation. In every contract of guarantee, there is an implied promise by principal debtor to indemnify the surety. मतलब कि प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट से जो लॉस हुआ श्योरिटी को, द लॉस which have to borne by the surety due to the default by principal debtor,
the principal debtor has to indemnify the surety. The surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but not sums which has been paid wrongly. गलती से जो sum पे के लिए उसके लिए liability नहीं है. X, see the example number 24. X took a loan from Y, which was guaranteed by Z. On default by X, Y filed suit against Z. X took a loan from Y, which was guaranteed by Z. On default by X, Y filed a suit against Z, and Z has to pay some legal expenses besides the loan of X. Now Z can claim those legal expenses from X. क्या केस है ये? X ने लोन लिया Y से, गारंटी किसने दी? Z ने. Y X पेमेंट नहीं कर पाया तो Y ने क्या किया? सूट फाइल कर दिया Z के लिए, और Z को लोन तो चुकाना ही पड़ा, साथ में कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी पे करने. अब Z X से लीगल एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकता है लोन के पेमेंट के साथ. क्लियर? मिस्टर आलोक इज सेइंग we can say after payment by surety, contract between principal debtor and creditor will end, and contract between surety and principal debtor, yes, we can say. Sapna sir, yes sir, clear sir. Pranav, clear sir. Harshit, clear sir. Mr. Ingle, in this example, if security is there, then what is the need of surety? Okay. He is saying कि सर जब सिक्योरिटी थी तो गारंटर की जरूरत थी. ठीक है, सिक्योरिटी को ऑक्शन करने बहुत सा प्रोसीजर होता है. तो पहले बैंक अपना सेफ करके चलता है, तो गारंटर भी साथ में रखता है कि हमें गारंटर से ही पैसा मिल जाए, हमें सारी प्रोसेस में ना जाना पड़े कि प्रॉपर्टी को बेचना है, ऑक्शन करनी है, एक लंबा प्रोसेस. ठीक है ना? ये एक टर्म्स एंड कंडीशन है बैंक की. दोनों पॉइंट क्लियर बच्चों? क्लियर? सपना ने कैसे क्लियर हो गया सर मुझे तो. नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर. Right to get security. The surety has the right to demand from the creditor all the securities which the creditor has against debtor, whether they have been received before, at, or after the creation of guarantee, whether those are in the knowledge of surety or not. What for section 141 says कि भैया surety अगर पेमेंट करता है लायबिलिटी का और कुछ सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हो, बाद में हो, राइट, सिक्योरिटी की नॉलेज में हो या नहीं हो, वो क्रेडिटर से क्लेम कर सकता है. प्रथम took an advance of rupees 1 lakh from Ch-1 which was guaranteed by Samar. Thereafter, Pratham gave jewelry of rupees 1 lakh to Ch-1 as security which was not in the knowledge of Samar. After some time, Pratham became insolvent. Ch-1 filed a suit against Samar, and that time the market value of jewelry was 95,000. Now Samar is liable only for rupees 5. 1 लाख का लोन था, सिक्योरिटी दे दी 1 लाख रुपए की, वैल्यू रह गई 95,000 की जब डिफॉल्ट हुआ. तो श्योरिटी की लायबिलिटी केवल 5,000 रुपए की होगी, जो लॉस क्रेडिटर को एक्चुअल में हो रहा है. प्रणव का एक क्वेश्चन आया, क्या कह रहे हैं सर, पर ये तो श्योरिटी का फॉल्ट है ना कि क्रेडिटर को पेमेंट नहीं मिला और उसने सूट फाइल कर दिया, तो फिर डेटर क्यों इंडेमनिफाई करे? वाह, ये क्या बात हुई भाई. मान लो प्रणव को मैंने गारंटर बनाया, किस बात की? लोन लिया मैंने बैंक से और प्रणव ने गारंटी दे दी, तो बेनिफिट तो मैंने लिया भाई, प्रिंसिपल डेटर ने, चुकाना तो मुझे था, और बेचारे प्रणव को लौटाना पड़ा क्योंकि वो गारंटर था. तो लायबिलिटी तो मेरी है ना अल्टीमेटली, बेनिफिट किसने लिया? मैंने, तो मैं ही लौटाऊंगा उसे. प्रणव क्लियर हुआ बेटा? सेकंड पॉइंट, राइट टू सेट ऑफ. ये कहता है दिस राइट सेज इफ देयर इज एनीथिंग टू बी पेड टू बी रिकवर्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर फ्रॉम क्रेडिटर, दिस विल बी एडजस्टेड. कि मान लो जो पेमेंट हुआ
उसमें क्रेडिट प्रिंसिपल डेटर को कुछ चाहिए था क्रेडिटर से, तो वो सेट ऑफ करके ही लायबिलिटी बनी। सी व्हाट इज, सी द एग्जांपल, देन वी विल कम टू द पॉइंट। X took a loan of rupees 5,000 from Y, which was guaranteed by Z. X ने लोन लिया 5,000 रुपए का Y से, जिसकी गारंटी किसने दी? Z ने। Now there was another contract between X and Y in which Y had to pay 1,000 to X. एक और कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें गारंटी नहीं थी, किसने लिया था? कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? जिसमें Y को 1,000 रुपए देने थे X को। अब जब 5,000 रुपए की लायबिलिटी का टाइम आया तो वो डिफॉल्टर हो गया। कौन? X। वाई ने सूट फाइल करा जेट को, तो जेट कहेगा भाई साहब पहले लायबिलिटी एडजस्ट कर लो तब राइट क्लेम करना। जेट विल से दैट मिस्टर वाई यू हैव टू रिसीव 5,000 बट यू हैव टू पे 1,000, so net liability is only for 4,000, so I am liable only for 4,000. क्लियर? अब्दुल का क्वेश्चन आया ज्वेलरी वाले केस में, sir, if there is here a case value is 1,10,000, then who will get the excess of 10,000? Principal debtor gets in. Can surety claim the legal expenses from the principal debtor? देखो भैया, अभी हमने क्या डिस्कस किया था पिछले एग्जांपल में, आते हैं जब कि ज्वेलरी की वैल्यू रह गई 95,000 की, द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट इज 95,000 and surety will be liable for 5,000. But Abdul is saying, sir, if the value of the jewelry become 1,10,000, then the 10,000 who will get? Mr. Principal debtor will get 10,000. And if surety has to pay some expenses on this contract, legal expenses, he can claim from 10. कि सर ज्वेलरी हुई अच्छा 1,10,000 की हो गई, 10,000 बचे, वो किसका पैसा है? वो प्रिंसिपल डेटर का है ना, ओनर तो वही है। अब मान लो श्योरिटी ने कुछ खर्चा किया लीगल एक्सपेंसेस इस पूरे तामझाम में, तो वो 10,000 से क्लेम कर सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू शेयर रिडक्शन। सी द एग्जांपल, X took a loan of rupees 5,000 from Y, which was guaranteed by Z. X become insolvent, and only 25% is realized from his property against the liability. Now Y will receive 1,250 from X, and now Z will be liable only for remaining amount, that is 375. X ने लोन लिया 5,000 रुपए का Y से और ड्यू डेट पे Y हो गया, X हो गया इंसॉल्वेंट, और उसकी प्रॉपर्टी से 25% रियलाइज हुआ। कितना रियलाइज हुआ? 1,250। तो Y को X से कितना मिलेगा? 1,250। तो शॉर्ट कितना रह गया? 3,750। तो Z कितना लायबल होगा? ओनली फॉर रिमेनिंग पार्ट, दैट इज 375। क्लियर? प्रणव कह रहे हैं सर फिर बैंक के केस में भी बैंक बिल्डिंग सेल कर देगा और इफ रिमेनिंग देन श्योरिटी विल पे, उसे क्रेडिटर के जूते पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुको, अगर बैंक ने डिसीजन लिया कि प्रॉपर्टी सेल आउट करता है, फॉर एग्जाम्पल लोन था 10 लाख रुपए का, और बैंक ने उस आदमी की प्रॉपर्टी जिसने लोन लिया था बेची तो 8 लाख मिले, 2 लाख उसको देने हैं इसको श्योरिटी को। अब श्योरिटी 2 लाख वसूल करेगा प्रिंसिपल डेटर, सिंपल सा फंडा। क्लियर? मिस्टर इंग्लैंड ने कह दिया क्लियर, अब्दुल ने कहा क्लियर, आलोक ने कहा सर यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो बचे कितना? खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। अगर चैप्टर खत्म तो 4 नंबर पक्के, चैप्टर क्लियर हो गया तो। नेक्स्ट पॉइंट, राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी। यहाँ तक कोई डाउट और किसी को पूछ लो, बच्चों को क्वेरी हो तो फिर बस लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए। एक सुपर ओवर, देन गुड नाइट। चलो भाई, कोई क्वेरी नहीं है बच्चों की मेरे की, होशियार बच्चे हैं सारे मेरे, सब सीए बन जाएंगे फटाफट से। चलिए, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन इक्वली। लॉ सेज
if they are co-sureties and it is not decided, what ratio they will taking the guarantee, they will giving the guarantee, then is 50-50. Unless otherwise agreed, each surety is liable to contribute equally for discharge of whole debt or part of the debt remains unpaid by the debt. पर जितनी लाइबिलिटी चुकानी है, पार्ट या पूरा चुकाना पड़ा, तो उसमें लाइबिलिटी इक्वल रहेगी अगर कुछ डिसाइड नहीं. Example 28. X, Y, and Z had given the guarantee for a loan of rupees 30,000, which was lent L to M. Now, in this case, if M defaults, X, Y, Z will be liable for 10,000 each. X, Y, Z ने मिलकर गारंटी दी 30,000 रुपए की, अगर डिफॉल्टर हुआ तो तीनों मिलकर 10,000 रुपए चुका. बहुत सिंपल सी बात. साथ ही हाथ बढ़ाना. अगला, राइट टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली एग्रीड सम. ये तो पूरा एग्जाम्पल आपको समझ. पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, बाद में सेक्शन 147 पढ़ेंगे. Example 29. X, Y, Z are sureties to M. Enter into 3 several bonds, each in different penalty. X in the penalty of 10,000, Y 15,000, Z 30,000. What it means, X, Y, Z are co-sureties, but they are guaranteeing different amount. X says I am liable for 10,000. Y says I am liable for 15,000. Z saying I am liable for 30,000. Okay. Now, in case M default of 30,000, then X, Y, Z will be liable for 10,000 each. क्योंकि X की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है 10,000, Y की 15,000, Z की 30,000. शेयर तो इक्वली करेंगे, बट अप टू द अमाउंट जितना उन्होंने गारंटी दी है. Let's say, see example number 30, the default is of 40,000. So X is liable only up to 10,000. Remaining liability 30,000. Then Y and Z will give 15,000 each. See example number 31. If the liability is of 50,000, X will pay 10,000 up to its maximum limit. Y will pay 15,000 up to its maximum limit, and Z will pay 25,000. If co-sureties have guaranteed for different sum, they are liable to pay equally as far as limits of their respective obligation per. कि भाई शेयर इक्वल करना है, लेकिन अप टू द लिमिट के बाद नहीं करेगा, बाकी दूसरे लोग करेंगे. तो एग्जांपल नंबर 29 में क्या है कि तीनों ने लाइबिलिटी ली. एक्स, वाई, जेड ने. एक्स ने कहा मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी 10,000 की, वाई ने कहा मैं 15,000 तक दूंगा, जेड ने कहा मैं 30,000 तक दूंगा. लॉस हुआ 30,000 का डिफॉल्ट. तो तीनों लाइबिलिटी कितनी है, शेयर होगी इक्वली 10,000. कोई दिक्कत नहीं है. 30 में अगर हम देखें लॉ डिफॉल्ट हुआ 40,000 का. ठीक है. अब 40,000 डिवाइड करेंगे तो 13,133. बट एक्स हैज गिवन द गारंटी ओनली अप टू 10,000. तो भैया तुम तो 10,000 रुपए दे. लाइबिलिटी बची कितनी, 40,000 में 10,000 पेमेंट हो गया, 30,000 बची. वो दोनों कौन बियर करेंगे, वाई और जेड. तो 15,000 वाई के और 15,000 जेड के. अब डिफॉल्ट सपोज 50,000 का था, तो एक्स लाइबिलिटी कितनी हुई इक्वल, बांटे तो हम अबाउट 16,667. तो भैया उसने एक्स ने कहा मैं तो 10,000 दूंगा. एक्स ने कहा 10,000 दूं, जाओ. बची कितनी लाइबिलिटी 40,000. इक्वल शेयर कितना हुआ 2020. लेकिन वाई ने कहा मैं तो 15,000 ही क्या चला था भाई साहब, 15,000 ही मेरे पास. तो वाई का चाहिए तुम 15,000 दो. जेड ने कहा तो मैं 30,000 दूंगा, तो तुम 25,000. क्लियर इतनी बात. इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को, बी पॉइंट में. आलोक कह रहे हैं सर मुझे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया. वेरी गुड. अब मैं जो बोले रहा हूं ना बेटे, सुपर ओवर, इसमें सारे आंसर आपको सही आने चाहिए मेरे पास. क्लियर तो हुआ है. मोहम्मद असलम सेइंग इट मींस जॉइंटली एंड सेवरली. यस. इंग्लिश सर चैप्टर इज क्लियर. वेरी गुड.
Sapna is saying, sir, right to claim only agreed sum means loss shared in loss sharing ratio. इक्वल बांटना है, बट अप टू शेयर रेशियो तो इक्वल है ना, बट अप टू द लिमिट, हमें लिमिट को भी ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो हमारा एक देखो चैप्टर तो हमारा हो गया, चैप्टर हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब लोगों के फुल आने चाहिए। अब देखो आलोक ने कहा सर मैं ट्राई करता हूं फुल के लिए, ठीक है, बाकी सब लोग ट्राई करो, कोशिश करो अब ये थर्ड सुपर ओवर सबके सही आंसर आए। चलो भाई शुरू करते हैं। सेक्शन 142 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद गारंटी ऑब्टेन्ड बाय फ्री कंसेंट, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, guarantee obtained by misrepresentation, none of the above. मोहम्मद असलम कह रहे हैं सर मैं फर्स्ट आऊंगा आंसर देने में। ठीक है बेटा, मैं वेट करूंगा। एक अच्छा क्वेश्चन है वेदांत का, मुझे लग रहा है सेकंड क्वेश्चन जो सुपर वर्ग उससे पहले वेदांत की प्रॉब्लम होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा, सब लोग सुनो ध्यान से। सर व्हाट इफ द लायबिलिटी इज ऑफ 1 लाख with the same bond limits of 3 people, then what will be the treatment of remaining amount? देखिए अगर 1 लाख की लाइबिलिटी है, तीनों के लिए कितना रहेंगे, 10,000, 15,000 और 30,000। बाकी लॉस तो क्रेडिटर को बियर करना पड़ेगा, प्रिंसिपल डेटर से क्लेम करना पड़ेगा, श्योरिटी विल नॉट बी लाइफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, any guarantee obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is valid, invalid, both A and B, none of the above. असलम साहब सारे आंसर एक बार में देने बच्चे मेरे। ऐसे नहीं असलम भाई चलेगा, आप एक करके भेज रहे हो, सब बच्चे साथ में चल रहे हैं। थर्ड, a continuing guarantee may at any time be revoked by surety as to future transaction by giving notice to creditor, principal debtor without giving any notice to any person, none of the above. क्वेश्चन सिंपल ये है कि अगर कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक करनी है तो श्योरिटी नोटिस कैसे देगा? लॉजिकली लगाना है आपको आंसर। फोर्थ, as per section 143 the contract of the contract act, guarantee obtained by creditor by concealment is invalid, valid, both A and B, none of the above. A surety has a right of indemnity and the right of subrogation against principal debtor, creditor, co-surety, all of these. Last question of the last super over. A surety is not discharged if a contract to give time to principal debtor is made by creditor. A surety is not discharged if a contract to give time to principal debtor is made by creditor with principal debtor, any person other than principal debtor, either A or B, none of these. कहता श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा अगर
कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर को टाइम दिया गया क्रेडिटर द्वारा, किसे दिया गया? प्रिंसिपल डेटर को दिया गया या किसी और पर्सन को दिया गया, या ए और बी, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं कौन आया। आप चलो पहले मैं आंसर डिस्कस करता हूँ, बाकी बच्चों के आंसर तो आ गए मेरे पास। चलो भाई शुरू करते हैं। और मुझे इस बार उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सबके आंसर सही जाएंगे। पहला है सी, गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्री कंसेंट फ्रॉड, ये तो कंसेप्ट ही नहीं है बच्चों। गारंटी, एक सेकेंड, 1 मिनट। Guarantee obtained by means of misrepresentation is invalid. A continuing guarantee may at any time be revoked by surety as to future transaction by giving notice to creditor को notice देना है। Fourth point, as per section 143, the Contract Act guarantee obtained by creditor by concealment is invalid. Fifth point, surety has a right of indemnity and right of subrogation against principal debtor. Surety is not discharged if a contract to give time to principal debtor is made by creditor with any person other than principal debtor. ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। First one who has given all the correct answer is Mr. Abdul Qadir. Congratulations, sir. Next one is Mr. Harshit Jaiswal. Congratulations. Next one is Mr. Sujal Negi. Congratulations. Sujal साहब, आपका तो पहला मेरे को मैसेज आया अभी तक। आप भी एक्टिव रहा करो, क्वेरी पूछा करो बच्चे। यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ, सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं इस बार तो। आप तो बिल्कुल जाग गए। मिस्टर उदय विश्वकर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिस्टर प्रणव वशिष्ठ, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। मिस ज्योति झा, और कौन है? मिस्टर सुनील कुमार, वेरी गुड। असलम साहब, आपका एक आंसर गलत हो गया। आपने आंसर तो सबसे पहले भेजे थे, लेकिन आपका एक आंसर गलत था। मुझे तो सारे आंसर सही चाहिए थे। सपना, वेरी गुड। अच्छा, आलोक साहब का भी आंसर सही आ गया। आलोक साहब का भी सही है सारे आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे। असलम साहब कह रहे हैं सर आप अनाउंस करें सबसे पहले किसने भेजे। देखो आंसर आपने भेजे 1 by 1 असलम साहब, और सारे आंसर सही जो भेजे उसने भेजे मिस्टर अब्दुल कादिर साहब ने। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, अभी तो टाइम बाकी है बच्चों। बात नहीं, चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट से रिवीजन करते हैं 5 to 10 मिनट्स में जो हमने पढ़ा, उससे सारा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है ना? तो what is the indemnity? Indemnity means to make good the loss incurred by another person, section 124. But again we have to refer the case of Gajanan Mauricio versus Mauricio Madan. Parties, there are two parties, indemnifier and indemnity holder. Indemnifier means who promised to compensate the loss, and whose loss is to be compensated is called indemnity holder.
Right of indemnity holder, just three rights: right to recover all damages, right to recover cost of suit, right to recover other sums. ठीक है. Guarantee means contract to perform the promise, discharge the liability of a third person in case of its default. And parties, there are three parties: surety, who give the guarantee; principal debtor, in respect of guarantee is given; and creditor, to whom the guarantee is given. ठीक है. Essentials: purpose should be debt should be existence, consideration, there should not be any misrepresentation, concealment, and contract of guarantee may be written or oral, and co-surety may be joining part. Types of guarantee we have discussed. There are two types of guarantees: specific guarantee and continuing guarantee. Guarantee which extend to single debt or specific transaction, and surety liability automatically comes to end when the guaranteed debt is duly discharged. Continuing guarantee is the guarantee for a series of transactions, and surety liability continues until the revocation of guarantee. Mode of discharge of surety, there are three ways: by revocation, by conduct of creditor, or on invalidation of contract of guarantee. So first one, by revocations में by notice, by surety death, or by novation. याद रहेगा बच्चों. By conduct of the creditor, by variance in terms, release of or discharge principal debtor, composition or compromise with principal debtor, or impairing the surety's remedy. Third one, on invalidation of contract guarantee, guarantee obtained by misrepresentation, obtained by concealment, guarantee on contract that creditor shall not act until co-surety joins. Rights of a surety against principal debtor: right of subrogation, right of indemnity against creditor, right to security, right to set off, right to share the reduction in case of insolvency. Against co-sureties, right to claim contribution equally and right to claim contribution up to the limit. यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ. असलम साहब कह रहे हैं सर I will read till morning. मैं सब पूरा खत्म कर लूँ, सारा चैप्टर खत्म कर लूंगा. वेरी गुड, सब लोग कर लेंगे यार, सब लोग करेंगे. अभी तो मुझे क्वेरी बताओ सब लोग, कोई क्वेरी हो तो बताओ. अच्छा, प्रेजेंटेशन पर मैं डिस्कस करूंगा कल. थोड़ा सा आज आप यूज्ड टू हो जाओ इस एक्ट को लेकर. हालांकि मैंने ऑलरेडी आई हैव गिवन द वे ऑफ प्रेजेंटेशन टेकिंग द एग्जांपल of January 2021 question. So you can go through the example, and definitely I will take in the next class the presentation in the last. Or one more thing, जो पुराने student they knows, in the next class we will have the revision of what we have discussed today, and after that we will have a self assessment test of 10 MCQs. Okay, then we will go for the unit 2. Clear? Anyone else? Sapna sir, crystal clear. Harshit sir, no doubt. कोई doubt नहीं है. Very good. Alok sir, all clear till now. Thank you sir. Thank you बच्चे. Mr. English, no doubt sir. Anyone else? Then we should end the class. कोई और query हो बच्चों की बताइए please. But I am very much happy with the performance in Super Over 3. लगा कि अब सब जाग गए. बस मेरी बात मान के, what you have to do, you have to complete this act. आज ही complete करना है आपको this act, this unit today evening, and in the next morning you just get the revision within 5 to 10 minutes by somebody. This will be permanently pasted in your mind. ठीक है? और कोई डाउट तो थैंक यू. मेरा तो कोई डाउट नहीं है. So thank you so much from my side. I have tried to give my best. Hopefully you enjoy the class of law. Thank you, bachcho. Thank you so much. Manish ji, the class is over.